On the top of the page, the date should be on the left side and the day should be on the right side of your page. Topic is making 10 बनाना. 10 कैसे बनता है हम वो देखते हैं. Question number 1. Add the following. अब हमने इसमें एडिशन करनी है, जमा करना है, using the number line. A part is 1 plus 9 is equal to 10. This question is already solved for you as an example question कि जब हम 1 में 9 को प्लस करेंगे तो आंसर will be 10. B part. Let's start our work. Here you should write your answer here. Dash plus 10 is equal to 10. जब हम 10 में कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि वो 10 ही रहे तो क्या होगा? It means here comes the zero. यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे. जब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं the answer stays the same. तो हमारा आंसर सेम रहता है. मूविंग टूवर्ड सी पार्ट. 2 + 8. अब हमने नंबर लाइन को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब इसमें क्वेश्चन में क्या है? 2 + 8. इट मीन्स 8 में हमने 2 डिजिट्स ऐड कर देने हैं. इट मीन्स हम फॉरवर्ड जंप्स करेंगे. 1 जंप, 2 जंप. सो वी रीच ऑन 10. द आंसर विल बी 10. हमने 8 को फॉरवर्ड 2 जंप्स ली तो हम 10 पर पहुँचे और आंसर हमारा क्या आएगा? 10 आएगा. नेक्स्ट, डैश प्लस 6 इज इक्वल टू 10. इट मीन्स 10 में हमने 6 को ऐसा क्या नंबर ऐड करना है कि आंसर 10 आएगा. तो हम क्या करेंगे? वी विल पुट आवर पेंसिल ऑन 10 एंड मूव 6 जंप्स. 1 2 3 4 5 6. तो हमने बैकवर्ड 6 जंप्स ली तो हम किस पे पहुँचे? 4 पे. इट मीन्स वी विल ऐड 4 × 6 देन द आंसर विल बी 10. तो आंसर 10 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, ई पार्ट. 6 + 4. 6 में 4 को प्लस करें तो क्या आता है? सो यू पुट योर पेंसिल ऑन 6 एंड मूव टूवर्ड्स 4 जंप्स. 1 2 3 4. आफ्टर 4 जंप्स वी विल रीच ऑन 10. सो योर आंसर विल बी 10. एफ पार्ट. Dash plus 3 is equal to 10. It means you move backward jumps. 10, 1 jump, 2 jump, 3 jump. You will reach on 7. So your answer will be 7. 7 plus 3 is equal to 10. Moving towards G part. 9 plus 1. It means 9 में एक नंबर आपने प्लस करना है तो क्या आंसर आएगा? 9 + 1. 1 जंप ली तो 10 पे पहुंच गए. इट मीन्स योर आंसर विल बी 10. नेक्स्ट, 6 + 4. 6 से फॉरवर्ड जंप्स 4 लेंगे. 1 2 3 4. यू रीच ऑन 10. सो योर आंसर विल बी 10. 5 + 5. इट मीन्स 5. You put your finger on 5 and move forward 5 spaces. 1 2 3 4 5. You reach on 10. So your answer will be 10. 3 + 7. It means you put your pencil here on 3 and move 7 jumps. 1 2 3 4 5 6 7. You reach on 10. Yes, very good. So your answer will be 10. Question number K part. 8 + 2. It means put your pencil on 8 and move 2 jumps. 1 2. So your answer will be 10 and you write 10 over here. Okay class. Question number 2. Take away from 10. Firstly हमने इसमें ऐड किया 10 को. क्वेश्चन नंबर 2 के हमने टेक अवे करना. टेक अवे मीन्स टू सब्ट्रैक्ट, टू डिक्रीज और टू रिड्यूस, कम करना. तो 10 में से हमने ले लेना है. अब हमने क्या लेना है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ए में. एंड वी यूज़ नंबर लाइन एज वेल. 10 - 2 इज इक्वल टू 8. 10 में से 2 को निकाल दिया. इट मीन्स बैकवर्ड स्पेसिस लेंगे. 1 2. तो आंसर क्या आया? 8. सो आंसर विल बी 8. बी पार्ट. सो क्लास 10 minus what number? So we get 5. तो आप क्या करेंगे? 10 पे अपनी पेंसिल रखेंगे और बैकवर्ड 5 जंप्स लेंगे. मीन्स 1 2 3 4 5. आफ्टर बैकवर्ड 5 जंप्स you will get 5. So your answer will be 5. 10 - 5 we get 5. Next, 10 - 6. So you move backward 6 jumps. 1 2 3 4 5 and 6. You reach on 4. So your answer will be 4. It means 10 - 6 is equal to 4. Next, 10 - 7. So
You put your pencil on 10 and move 7 backward jumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. You reach on 3, so your answer will be 3. Next, 10 minus what number? So we get 6. So it means 10 minus 6. It means you jump backward 6 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you reach on 4. It means 10 minus 4, you get 6. It means you put your pencil on 10 and you move 9 backward jumps. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And you reach on 1. It means 10 minus 1 and you get 9. Your answer will be 9. So in question G part, 10 minus 8, it means you put your pencil on 10 and move 8 backward spaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You reach on 2. So your answer will be 2. 10 minus 1, you move 1 backward jump. You reach on 9. So your answer will be 9. Same as 10 minus 10. It means you move backward 10 jumps. 10 jumps leave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jumps लेने के बाद you reach on 0, so your answer will be 0. In J part, question is 10 minus 3. It means you put your pencil on 10 and move backward 3 jumps. 1, 2, 3. You reach on 7, so your answer will be 7. In K part, 10 minus 0. जब आप 10 में से 0 निकालते हैं, it means you are subtracting nothing from 10. So your answer will be 10. So class, I think you will understand your classwork very well. So moving towards page number 10, this is your homework. You will write very neatly date and day on the top of your page. So क्वेश्चन नंबर 3 इज लुक एट द नंबर्स इन द ग्रिड. ये एक पूरी ग्रिड आपको दी गई है. इसमें आपने नंबर्स को देखना है. सम पेयर ऑफ नंबर्स ऐड अप टू 10. कुछ ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स भी हैं जो कि 10 बनाते हैं. फाइंड दैम, उनको हमने ढूंढना है. एंड कलर दैम, और देन आपने उनको कलर करना है. 2 पेयर्स हैव बीन डन फॉर यू. इनमें से 2 आपके लिए एज एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं. अब पेयर क्या होता है? पेयर होता है 2 नंबर्स की चीज़. जैसे आपके 2 हैंड्स हैं, इट मीन्स यू हैव पेयर ऑफ हैंड्स. 2 हैंड्स हैं तो पेयर ऑफ हैंड्स हैं आपके. इसी तरह दिस पेयर ऑफ हैंड्स हैज़ 10 फिंगर्स. और ये 2 पेयर ऑफ हैंड्स की कितनी फिंगर्स हैं? टोटल 10 फिंगर्स हैं. सेम अब आप यहाँ पर देखिए 9 + 1 क्या बनता है? 10. 6 + 4 करेंगे तो भी 10 बनेगा. आपने ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 10 बनाते हों. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सॉल्व करके देती हूँ जी. जैसे है 1 + 9 हम करेंगे तो क्या आएगा? 10. सो you will color here like this. I am doing this with pencil, but you do it with pencil colors. Then second pair of number is 10 + 0. It means 10 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो 10 ही रहेगा. So this is also a pair of number. So you color it as well. इसी तरीके से क्लास 1 आपने अपने इस पूरे ग्रिड में से पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं, एंड देन कलर इट. ओके क्लास, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकना नहीं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.